Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपने कैट अगर आपने सोचा कि आप कैट दे रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे मोस्टली हर सीए पूछता है इज क्या मैं जॉब छोड़ दूं? तो आई थिंक डेफिनेटली मेंटरशिप तो बहुत हेल्प कर जाती है यार, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डू इट एंड दे नो इट. नाउ मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ नहीं आती, ठीक है. एंड आई टेल यू, आई यूज्ड टू गो टू अ लाइब्रेरी टू स्टडी एंड basic doubts I had to go to engineers to ask. BARC section is RC. RC अच्छे से कर लो, and for that read articles, read Hindu. Hi everyone and hi Akshay. Welcome back to the Real Humans of B-School. Sir, thank you so much. Thank you so much for calling me once again. अक्षय यार, अपन कितना बात कर रहे हैं तब से और तेरे को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, बट हम लोग बात करते जाएंगे. This video is very important for all the people who are listening to you. This is going to be CA's guide for cracking CAT. मैं चाहता हूँ जितने भी CA अभी जो सोच रहे हैं मुझे MBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तेरा मेरा वीडियो पुराना देखा होगा उन्होंने. मैं तो यार इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल से मैं देखो बता रहा था, जय गोसलिया वो CPT रैंकर, और फिर हर्षा वेरी गुड फ्रेंड, शी वाज वर्किंग विद मी, CA ऑल इंडिया रैंक 3, और Jay was 35 all India. These guys have also nailed it. But what is your strategy? What do you want to tell them? आज इनका मूड बनने हैं, ये बोर हो गए हैं PwC में टैक्सेशन करके, ऑडिट करके, और इनको भी या EY में. तो what should be they doing and how to start their preparation? Okay. So first of all, अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपने सोचा कि आप कैट दे रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे मोस्टली हर सीए पूछता है इज क्या मैं जॉब छोड़ दूं? तो मैं बोलूंगा कि बॉस, डोंट लीव योर जॉब. कैट इज अनप्रेडिक्टेबल, यू हैव नो आइडिया. सीए मतलब एज एन इंजीनियर तो फिर भी चलो ठीक है, यू हैव अ बेटर चांस बिकॉज अब तो तोड़ ही दोगे कैट, इंजीनियर तोड़ ही देते कैसे भी करके. बट सीए में मैं वही बोल रहा हूँ कि देयर इज नो गारंटी, यू माइट clear it, you might not clear it. So firstly, don't leave your job. Start early. अगर कैट होता है नवंबर एंड दिसंबर में, so I think the right time to start would be या तो दिसंबर, so that you have 1 year to prepare, और कुछ नहीं तो मार्च अप्रैल तक तो you should start मेरे हिसाब से to have a good attempt, because you'll be working along with office. Then secondly, join some good classes where you get good content and good professors. So do that. प्लस कैट में देखेंगे तो 3 सेक्शन होते हैं, LRD है, क्वांट एंड इंग्लिश, ठीक है, और वी वो बट मैंने बात नोट करी, सीए वालों को क्लास की इंपॉर्टेंस हमेशा पता चल जाती है, बिकॉज़ तुम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे आए हो, so you guys know that it's very important to have the right material and the right mentor as well to start preparing. very important मतलब when I became a CA, मैं तो literally 50% श्रेय देता हूँ अपने जो भी क्लास था मेरा इन CA. So I think definitely mentorship तो बहुत हेल्प कर जाती है यार, because we don't know how to do it and they know it. So it is very good if you join a good classes, and so that you can get properly hand holding, आपको अच्छा मिल जाता है. So join a class. उसके बाद there are 3 sections as I told you: English, verbal, quant and LRD है. So luckily LRD है तो आप निकाल ही लेंगे, आपने कैट निकाल दिया है तो अगर आपने सीए निकाल दिया, आपका लॉजिक तो अच्छा ही है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी इतना कुछ टफ नहीं रहता. बट व्हाट कुड बी चैलेंजिंग इज 2 things: either the verbal part or the quant part, and majorly focus on quant part. So I think here quant में Ask me, मैंने इतने पढ़ाए हैं ना क्वांट वाले बच्चे, मतलब माय गुडनेस, ये बोलते सर क्वांट करवा दो बाकी तो हो जाएगा. तो या मतलब I'll tell you sir, even now मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ नहीं आती, ठीक है. And I'll tell you, I used to go to a library to study, and basic doubts I had to go to engineers to ask, because luckily वहाँ पे बहुत लोग आते थे. So okay, you have to accept the fact that we are not as good as engineers in this section. So it is very important that we start ekdam from basics and keep asking doubts whenever we get any to your कोचिंग सर जो भी है. सो एकदम बेसिक से जाओ, शुरू करते जाओ, हर एक चीज करो. बल्कि कई लोग तो बोलते हैं कि 10th 11th की बुक्स खरीद लो, वहां से स्टार्ट करो, सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया, स्पेशली ऑफ ज्योमेट्री, बिकॉज ज्योमेट्री तो वी हैव नॉट इवन डन सिंस अ लॉन्ग टाइम.
So these are the things. Apart from that, How was it verbal? Verbal तेरा अच्छा था? How was it verbal? luckily verbal मेरा काफी अच्छा था. In the first mock itself, I got, I think in my first mock I got more than 90. First mock में. So I was मेरा verbal हमेशा अच्छा था. Verbal के लिए what I would suggest is यार every day, even after office आपके पास थोड़ा टाइम तो रहेगा ही ना. So what you could do is maybe just do one set. एक सेट ही कर लो, but do one set every day. And especially Saturday Sunday को तो एक घंटा आराम से एक घंटा you can definitely give a verbal. Especially RC. So अगर आप एक set of RC every day करोगे and 1 hour of RC in the weekends, I think you'll be sorted. Because if I'm not wrong, मेरे time पे तो at least 34 में से 24 questions were RC. So it was simple. If you wanted to crack, if you wanted to crack verbal, you had to crack RC. So I think the key to the VARC section is RC. RC अच्छे से कर लो, and for that read articles, read Hindu, and हर coaching section के पास हर coaching के पास भी there are various types of articles. कई होंगे abstract, कई होंगे philosophical, etc. तो वो हर एक करना, because the day of the exam you could get any of the articles. So I think that is एक होलिस्टिक अप्रोच से जाओ, बिल्कुल प्लान में पढ़ो, इंग्लिश पढ़ते रहो. एंड आई थिंक अक्षय ये भी मैं बहुत विश्वास रखता हूँ. देख जब तेरे पहले मॉक में वर्बल में 90 आ गया ना, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है कि यार ये सब्जेक्ट very true. and पूरा आई थिंक मेरे हिसाब से कैट इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस ओनली. अगर आपके लास्ट 3-4 अच्छे मॉक चले गए, आप वहां गए, आप देख रहे हैं कि आपके 97 98 आ रहे हैं मॉक में, तो यू आर लाइक ठीक है यार, कर लेंगे अपन, कर लेंगे. एंड देखा जाए तो एग्जैक्टली कैट का इतना हाई लेवल तो नहीं है एज कंपेयर टू अगर आप सीए बन चुके हैं, तो द लेवल ऑफ द सीए एग्जाम इज मच हायर देन द लेवल ऑफ कैट. इट्स जस्ट दैट कैट में आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, एंड देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच मे बी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद. सो डिफरेंस है. कैट में सब कुछ आना जरूरी नहीं है, सीए में सब कुछ आना चाहिए, कुछ भी पूछ लेंगे. ट्रू. यस, यही नहीं लोगों को बात समझ आती कि भाई यहाँ पे तेरे को सब कुछ नहीं आता ना, कोई टेंशन नहीं है, तेरे को 50% नंबर लेके आने कैट के अंदर, यू कैन एक्चुअली नेल इट. तो वो माइंड गेम है. सही बोल रहा है. एंड वन मोर थिंग, एज यू सेड कि हर चीज आपको का आंसर देना आपको जरूरी नहीं है. सो इफ यू डोंट नो वन थिंग, थोड़ा सा ईगो साइड रख के वी आल्सो नीड टू मूव ऑन समटाइम्स. अगर आपने 1 मिनट दे दिया है, आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन डिजर्व्स मोर देन 1 मिनट आरसी के हटा के, बिकॉज आपके पास टाइम ही कितना होता है. 1.5 minutes के अलावा don't give more time to any question if you are not able to solve it. Any parting thought that you have to all these people who are listening to you, यार इनको भी क्रैक करना है यार, ये भी पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं. Any parting thoughts that you have to all of these people, Akshay? एक अच्छे mindset से prepare every day. One very important thing which we did not talk about till now is the number of mocks. So giving one mock daily will not help you. What is also important is checking कि आपने mock दिया तो कैसा result है आपका. Analyzing your mock is equally important. Most of my friends who converted IMABC used to spend as much time analyzing the mock that they gave when they gave the mock. मतलब 3 घंटे का mock दिया, 3 घंटा analyze किया, so that you know कि अच्छा ठीक है, आप देख रहे हैं कि आप 5 मॉक से टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है. सो देन यू स्पेसिफिकली गो बैक टू टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वही आप सॉल्व करेंगे, सो दैट नेक्स्ट मॉक में यू गेट दैट राइट. सो एनालाइजिंग द मॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना. एंड आई वुड से कि ओवरऑल आई थिंक आई हैव गिवन अराउंड 20-25 मॉक्स मैंने दिए थे, एंड आई वाज मोर देन क्लियर विद माय स्ट्रेटजी, बिकॉज हर मॉक के बाद after the 7-8 mocks you will sort of get into your own, you have your own strategy. but आपको 10 मॉक लगते हैं स्ट्रेटजी बनाने में आपके, तो 10 मॉक स्ट्रेटजी बनाए, नेक्स्ट 10 मॉक्स आपने वो इम्प्लीमेंट किया, एंड देन बाय द टाइम आप एग्जाम तक गए, इट्स लाइक आपके पूरे मेमोरी में आपको पता है कि ऐसे ही जाना है. So Akshay, thank you so much. People who don't know, Akshay is going to be joining a big 4 right now. और ये CA पहले भी big 4 से ही आते हैं, फिर आगे big 4 जाते हैं और अंदर जाके छक्के मारते हैं और 2x 3x 4x पैकेज लेते हैं जो इनको पहले मिल रहा था, एंड और रोल भी चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा करते हैं लाइफ के अंदर. I wish you all the very best, Akshay. You're an awesome guy, यार. And thank you so much. I feel really good that you can being a CA, you're talking as a real human. So without thank you so much sir, thank you so much. मजा आ गया आपसे बात करके सर, हर बार की तरह.
Thank you so much. Thank you so much. Take care, man. Bye bye.